Good morning, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Can't see you. Okay, let me just check that. I hope I'm visible now. Great, great. Thanks for the confirmation. Good morning, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal, and I can see more people joining in. Apparently, our expert, yes, has joined us, and we will be starting the session soon. Let's wait for more people to join in, and then we are good to go. Meanwhile, you can drop your queries on Stockomo, and we'll be happy to take it up. Please share detailed queries. Okay, okay. Nikun sir, I have accepted your invitation. Please join in the stage. Can you hear me, sir? Yeah. Am I audible? Yes, sir. You are audible, but we can't see you. Okay. Just give me 1 minute. I'll just share my screen and then we're good to go. Sure. Right? Will we do live trading? Yes, Deepakji, we will do live trading. So the morning session focuses more around equity and stocks. So we will initiate one or two intraday trades, and after that we might, if opportunity is good, we might take some derivative trade, but focus will be on the stocks trade. And I remember initiating two BTSTs, Bajaj Auto and FSL. We will be starting the session with an update on that, go to the market overview, and then move towards stock queries. जब आप स्टॉक वेरीज पूछ रहे हैं रिक्वेस्ट यू टू बी मोर डिटेल्ड in terms of what stock you are asking, why you are asking, what is your long term view and what is your short term view, so that we can give detailed analysis according to that. And for the derivatives trade, generally हमारा afternoon session उसके around focus होता है. So we will be taking the derivatives queries, and also we'll be initiating the trade in the afternoon session. I hope I am clearly audible. You can write yes in the chat if I'm clearly audible. Okay, I've received one or two yeses. Okay, great. Thanks for the confirmation. So we have Nikunsa with us. We see him generally in our FinNifty expiry, and is part of the morning session as well. And Nikunsa, I guess we are all set. I guess everybody knows you, and you're part of Chandan Sir's team. I guess that is Yes. something that I should mention. I guess we can start with the BTST update and then move towards the market update and the queries. Okay. So the BTST were, I guess, Bajaj Auto, right? Bajaj Auto and FSL. There were two BTSTs that were initiated Okay. last time. Okay. So I just check. I think Bajaj Auto, I I think 10,000 जब तक होल्ड कर रहा है यू कंटिन्यू टू बी लॉन्ग ऊपर में 10,500 10,800 आ सकता है बजाज ऑटो में इवन फॉर एफएसएल our view is very positive. I think it can target 535 40 going forward. So I don't think there is any worry with regards to both the stocks. They're fundamentally sound, and you'll see higher levels even from the current market price. So good morning everyone. Welcome to the fresh week, first session of the week, and I'll start the session with wishing you everyone and all our members and to Anuj happy Janmashtami. So may this day be prosperous and the whole year to be prosperous for everyone. And start करते हैं फिर निफ्टी से, which is the main index. It has opened a gap up, continuing from the Friday's positive move and strong cues from the US market, wherein they close with strong gains. So the ripple effect has been seen on Indian markets as well.
So we have opened on a strong note, strong buying in major index heavyweights like TCS and HDFC. Even ICICI Bank has been strong from the opening tick. Even Reliance Industries, तो चार पांच जो major heavyweights है Nifty के, they have been trading strong and it has helped the index to scale by 0.5% in the morning. So 24,950 के आसपास है. जब तक 24,750 के ऊपर है, ऊपर में 24,150 एंड 24,300, ये दो लेवल्स स्लो एंड स्टेडी आ सकते हैं ऑन द निफ्टी इंडेक्स. सो 24,750 के ऊपर है, तब तक बाय एंड डिक्लाइन स्टैंस हमारा कंटिन्यू रहेगा निफ्टी में. एंड वी आर जस्ट व्हाट 100 almost more than 120 points away from our lifetime high, which was 25,078. So we can easily scale past these levels and see much higher levels till the time we hold 24,700 on the lower side for the immediate time per se. Nifty Bank की अगर बात करें, it has been underperforming but slow and steady नीचे से double bottom का पैटर्न बना के एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन चैनल को आज ब्रेक किया है एंड इट हैज बीन ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग. 51,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो जब तक 50,700 के ऊपर है, 50,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, I think buy and decline stand should continue in Bank Nifty as well. We can look for 51,800 and 52,200 going forward for the week per se. तो मीडियम टर्म टारगेट्स भी हायर ही है. तो 50,700 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, बायर शुड बी पॉजिटिव. आज दोनों मेजर बैंक्स, ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द बैंकिंग इंडेक्स के जो हेवी वेट्स है, दैट इज ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, दे हैव बीन ट्रेडिंग स्ट्रांग. तो बाय एंड डिक्लाइन स्टैंड शुड कंटिन्यू एंड ऊपर में 51,500 और 51,800 के लेवल्स आ सकते हैं. अगर स्टॉक्स की बात करें तो थोड़ा सा मिक्स क्यूज है. फ्यू सेक्टर के स्टॉक्स हैव बीन पॉजिटिव. आज आईटी, मिड कैप आईटी स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव रहे हैं, वेरिन एम्फसिस एंड LTI Mindtree, ये दो स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव है. द स्टॉक्स दैट इज ऑन आवर radar फॉर द टाइम बीइंग इज वन स्टॉक इज HBL पावर. आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है और रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है. तो अगर इंटरडे ट्रेड कोई लेना चाहता है तो दे शुड get into HBL power, which is quoting at 687, 688, keeping a stop of 678, look for 698 and 705 on the higher side. तो एक HBL power जो intraday trade setup समझ में आ रहा है, wherein you can get into HBL power for intraday per se at the current market price, which is 678, 687, 688, for an upside target of 695 or 698 and 705 on the higher side, keeping a support of 678. almost 1:2 to 2.5 का risk reward ratio है. तो एक रेंज ब्रेकआउट भी आया है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है. तो ऑल टाइम हाई उसने बनाया था 685 का, तो आज फ्रेश ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है एंड रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स, so which is a strong sign for any stock which आउट परफॉर्म्स. तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है. तो ऊपर में 698 and 705 के टारगेट के लिए one can look into HBL power for intraday per se, keeping a support of 678. I'm just repeating, sir. Buying near 687, stop loss 678, target 698, and the second target 705. Yes, perfect. So even index की अगर बात करें तो as I said, in ICICI Bank, Reliance Industries, HDFC Bank, these TCS, so major heavyweights have been trading strong, which has kept the index afloat. So 24,950 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. So I think the move should continue and we should scale to fresh life highs. Even Bank Nifty, I think for a change, has given a breakout from the sloping trend line and made a double bottom on a daily scale. तो ऊपर में 51,800 के लेवल आ सकते हैं for going forward. So I think in the meantime we can take few queries if we have. Sure, sir. Yeah. I guess we can start with Coal India. Okay.
आई थिंक कोल इंडिया इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है आज. 541 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो अगर आपका पोजीशन है तो यू शुड कंटिन्यू टू बी लॉन्ग, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 530 और 525. अगर नहीं है तो यू कैन गेट इनटू कोल इंडिया कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 525 एंड लुक फॉर 565 एंड 580 ऑन द हायर साइड. आई थिंक एक और स्टॉक, जस्ट सॉरी टू इंटरवीन, आई थिंक एक और स्टॉक जो इंटरडे प्ले कर सकते हैं इज BHEL. आई थिंक वीकली का एक नैरो स्ट्रक्चर NR4 का नेगेशन हुआ है, तो 50303 के ऊपर एक गुड सेटअप बन रहा है. तो आई थिंक इंटरडे ट्रेड्स के लिए अगर कोई देख रहा है तो दे कैन गेट इनटू BHEL, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 295 एंड लुक फॉर 315 ऑन द हायर साइड. तो आई थिंक 295 के सपोर्ट से 315 के टारगेट के लिए BHEL के लिए देख सकते हैं. वीकली नैरो जो डबल डोजी बना था और उसका हाई आज निकला है. तो आई थिंक जो इंटरडे के लिए प्ले करना चाहते हैं दे शुड गेट इनटू BHEL एज वेल. इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग. इवन निफ्टी CPSE इंडेक्स हैज गिवन अ नैरो रेंज का ब्रेकआउट. तो one can look into BHEL, which is a composite of Nifty PSE index. तो ऊपर में 315 के टारगेट के लिए अगर इंट्राडे 315 इज अ लॉन्ग टारगेट, बट अगर इंट्राडे प्ले के लिए कर सकते हैं तो 2% का टारगेट के लिए विद कीपिंग सपोर्ट ऑफ 1.5%. और 295 के सपोर्ट से लुक फॉर 310 एंड 315 ऑन द हायर साइड. So BHEL and HBL Power are the two intraday trades. अगर intraday नहीं करना है, अगर for the week also you can take, you can see at least 4-5% move on both these stocks if you keep it for a week. Sir, your view on pharma sector? So Nifty Pharma के अगर बात करें तो the index has been relatively outperforming. Slow and steady एक high top high bottom कंटिन्यू बना रहा है. वीकली स्केल पे भी स्ट्रॉन्ग है. डेली में 2-3 दिन का एक करेक्टिव मूव आता है, वापस बाइंग आ जाती है. तो आई थिंक निफ्टी फार्मा एज अ सेक्टर हैज बीन आउट परफॉर्मिंग एंड दे शुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म. इसमें विद इन दिस सेक्टर अगर स्टॉक स्पेसिफिक कोई करना चाहता है तो लुपिन इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक. लुपिन एंड ग्रैन्यूल्स, these are the two stocks. Even Sun Pharma, there are 3 stocks looking very good in on the Nifty Pharma. So pharma के लिए अगर सेक्टर प्ले करना चाहते हैं तो लुपिन and Sun Pharma and Granules, these 3 stocks are looking strong from Nifty Pharma. The Suzlon, people's favorite. Yes. So Suzlon I think थोड़ा सा consolidation mode में आ गया है, लेकिन I think one has to be long in Suzlon. 68 जब तक ब्रेक नहीं करता नीचे में, I think you have to be long in Suzlon. ऊपर में slow and steady 85 and 90 के टारगेट्स आ सकते हैं. थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है स्ट्रॉन्ग मूव के बाद. एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 81 के ऊपर, तो 81 निकल जाएगा तो 85 80 90 के टारगेट स्लो एंड स्टेडी आ सकते हैं. सर जोमेटो? इवन जोमेटो एक रेंज में है, लेकिन नीचे में 245 249 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो 249 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक यू हैव टू बी लॉन्ग इन जोमेटो. आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो एज वेल. अगर पोर्टफोलियो स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो definitely Zomato should be part of your portfolio. I think given 2-3 years it can scale to much higher levels. At least can be a 1-2 bagger. So I think अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो keep a support of 255 and look for 270 on the higher side. अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो you have to have Zomato in your portfolio. Sir, Godrej Property. I think Godrej Property after a corrective move थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है. अगर वीकली टाइम की बात करें तो एक नैरो रेंज में है. तो 2800 जब तक ब्रेक नहीं करता है आई थिंक इट शुड गो बैक टू 2950 और लेवल्स. बट नीचे में अगर 2790 ब्रेक करता है थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आ सकता है. एज ऑफ नाउ इट इज इन अ रेंज ओनली, बट 2825 इमीडिएट सपोर्ट है और 2790 इमीडिएट थोड़ा सा मीडियम टर्म सपोर्ट है. अगर 2790 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आ सकता है, बट 2825 के ऊपर है जब तक तो 2950 आ सकता है. Sir, NTPC 200 shares bought at 402.
402, I think you bought a good stock. थोड़ा सा it's not a trading stock, थोड़ा सा slow है. अगर आप 6-8 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो आई थिंक एनटीवीसी इज अ फैंटास्टिक स्टॉक. गुड 3-4% का डिविडेंड यील्ड भी आता है स्टॉक में. तो एंड लो बीटा है तो मेजर आपको कैपिटल इरोड नहीं करेगा. तो आई थिंक 395 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन है. अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में. आई थिंक एचबीएल पावर जो अपने शेयर किया था 696 ऑलमोस्ट 1.5% का मूव आया है. 687 से 696 का हाई किया है अभी. आई थिंक इंटरडे ट्रेड के लिए एक अच्छा मूव आया है. Sir, Bata India bought at 1445 short term. 1445. I think Bata has been underperforming where the index is almost near 100 points away from lifetime high. The stock is quoting almost near to a 52-week low. So which suggests that momentum is definitely not there on the positive side. In fact, it is underperforming the index. तो जो अंडरपरफॉर्मर रहता है तो यूजुअली जो छोटे भी बाउंस आते हैं तो दे गेट सोल्ड इनटू. बट आपने अगर बॉटम फिशिंग किया है तो 1420 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. ऊपर में एक जो गैप डाउन हुआ था वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेगा. तो 1490 1495 के आसपास आता है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स. Sir, good stock recommendation in semiconductor space. सेमीकंडक्टर आई थिंक सेमीकंडक्टर एज अ लिस्टेड स्पेस को ये है नहीं. बट आई थिंक अगर ऑटो एंसिलरी एज अ प्ले करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड बी विद संवर्धन मदरसन. आई थिंक दैट्स अ गुड स्टॉक. इवन फॉर दैट मैटर अगर डायरेक्ट ऑटो एंसिलरी ना प्ले करके ऑटो भी एज अ स्पेस भी आप प्ले कर सकते हैं. वेर इन TVS Motors and Eicher Motors. These are two stocks that are very strong on the chart as well. They have been outperforming. They have been launching good new what to say vehicle. And जो Jupiter अभी नया launch किया, even they have seen a good response. They have launched a few good EV as well. So I think Bajaj Auto as well. Even Bajaj Auto as a play looks very good. Two-wheeler has been the flavor of the town. So Bajaj Auto and Eicher and TVS, these three stocks you can play. अगर auto ancillary की तरफ जाते हो तो संवर्धन मदरसन is the best stock within the auto ancillary space. Sir, your view on sale? Steel metal as a sector has been underperforming lately. I think the global metal price has seen a cool off from their all-time high in the past 2-3 last 1-2 महीने से almost 20-30% from their all-time high they have corrected on the LME, that is London Metal Exchange. तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए. मेटल अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है लेकिन नीचे में एक सपोर्ट है. इमीडिएट सपोर्ट 130 128 का है. तो अगर 128 होल्ड करता है और ऊपर में 135 के ऊपर निकलता है तो 142 की टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं सेल. तो 128 is a support for sale. ऊपर में 142 145 immediate resistance point है. Sir, can we hold or sell Bajaj Auto, which was at BTST? I think you should definitely hold. The stock has been performing well. थोड़ा सा अगर एक strong move के बाद 1-2 दिन शायद sideways रहे, but the stock has been outperforming. तो जब तक 10,000 नहीं ब्रेक करता है you should definitely be in Bajaj Auto. Trading पर से 10,000 ब्रेक नहीं करता तब तक you have to be in the long side. Sir, view on Airtel? भारती एक कंसोलिडेशन में है लेकिन अच्छा ब्रेकआउट दिया, रेंज निकला है. तो 1512 है अभी. 1490 के सपोर्ट से आप अगर आपका पोजीशन है तो 1490 से होल्ड कीजिए. अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो 1490 शुड बी योर ट्रेडिंग स्टॉक एंड लुक फॉर 1530 एंड 1540 ऑन द हायर साइड.
I think So that HBL Power, I'm sorry to intervene again, HBL Power 703 का हाई किया है. So our first target तो hit हो गया है, second target की तरफ जा रहा है. So I think इंटरडे अच्छा प्ले हुआ है, 686 किया है, इससे 703 का हाई किया है. I think intraday they have got a good move, 704 almost days high. Yeah, Anuj. so Tata Steel. Again same like सेल नीचे से थोड़ा सा रिकवरी आया है, तो आई थिंक जब तक कैंडल का लो है 150, तो 150 नहीं ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना रख सकते हैं. तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 150 के स्टॉक से होल्ड भी कर सकते हैं. पर में 156 के ऊपर एक और फॉलो अप बाइंग आएगा व्हिच कैन टेक द स्टॉक टू 160 164 ऑड लेवल्स. Sir, HBL Power 699. HBL आई थिंक आज ही हमने इंटरडे ट्रेड भी दिया है, 709 का हाई किया, हमारा दोनों टारगेट हिट हो गया है इंटरडे के लिए जो दिया था. तो आई थिंक यू हैव टू बी लॉन्ग, 690 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. ऊपर में 725 740 भी आ सकता है फॉर पोजिशनल. Sir, BBCL purchased at 310 for short term. BPCL आई थिंक फॉलिंग क्रूड इज पॉजिटिव. क्रूड ऑलमोस्ट 6-7 मंथ लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक फॉलिंग क्रूड इज पॉजिटिव फॉर दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. तो एक शार्प रन अप आया है, अभी अब कंसोलिडेट कर रहा है. तो जब तक 345 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 340 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. ऊपर में 370 के टारगेट के लिए. Sir, irradiated target for next week. IRDA. Yeah. IRDA आफ्टर गैप अप एक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, डोजी बना है. तो आई थिंक 245 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. अगर 245 ब्रेक करता है तो वापस एक 240 238 के जोन में आ जाएगा. एक आफ्टर स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर से करेक्ट होके वापस कंसोलिडेट कर रहा है. कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था, अभी वो ब्रेकआउट वापस रीटेस्ट कर रहा है नियर 250. तो 240 अगर ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा वापस 238 235 के आसपास आ सकता है. मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है, बट ब्रेकआउट आया है तो आई थिंक 240 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. Guys, we can't comment on Motilal Oswal shares due to compliance reason. काफी बार आता है कि सर अपने मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताइए, आपकी कंपनी है, खुद बता सकते हैं, बट वी कांट ड्यू टू कंप्लायंस गाइडलाइंस, वी कांट. Sir, your view on ONGC? ONGC also is looking ऑलमोस्ट 4 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम नेगेट किया है. फ्राइडे को एक्स डिविडेंड भी हुआ है, तो आपको डिविडेंड भी आया होगा जिसने लिया है. तो 318 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. ऊपर में 335 और 325 335 एंड 340 के टारगेट कीजिए. Sir, your view on the electric sector, EV sector, I mean, sorry. EV आई थिंक एक ओला इलेक्ट्रिक ही लिस्टेड है. EV एज इन EV कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. अगर दूसरे EV एज इन और EV डेरिवेटिव प्ले करना चाहता है तो आई थिंक JBM Auto, then Orient, this I forgot the name. JBM Auto, even this Ola Electric, I think near 100 is a good buy. Even Tata Power, जो charging stations जो लोग develop कर रहे हैं, तो even that should be a good play with which is a derivative of electric EV play, not going with the manufacturer, but the derivative of EV. So I think even Tata Power is a good play. Even Tata Motors, which has a good market share in EV passenger vehicles, almost it's a leader in Indian EV passenger vehicles. So even Tata Motors is a good play. So you can diversify with regards to one
EV manufacturer, the other as a derivative of EV manufacturer. Got it, So sir. HBL Power, I think, has flown 719, so almost 13 and 20, 30 points ka swing aaya hai. So it's a good trade for intraday. It's a good start for people who have taken the position in that. Sir, your view on Yes Bank? In Yes Bank साइडवेज है, कोई ऐसा मेजर मूव नहीं है, तो 2350 का सपोर्ट है और ऊपर में 2550 26 का एक रेजिस्टेंस है. अगर पोजीशन नहीं है तो डोंट गेट इनटू यस बैंक, डोंट गेट इनटू ऑल दिस पेनी स्टॉक्स, बी विद द मार्केट लीडर. अगर बैंकिंग सेक्टर में ही आपको रहना है तो आईसीआईसीआई बैंक इज द बेस्ट बैंक विद रिगार्ड्स टू द प्राइवेट सेक्टर. अगर पीएसयू में रहना है तो एसबीआई, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया for that matter, are good banks comparatively, which will give you a better return than Yes Bank. Sir, Vodafone Idea? आइडिया एक रेंज में है, नीचे में 15 का सपोर्ट है, ऊपर में 1640 का रेजिस्टेंस है. तो एक ब्रेकआउट आएगा इसके ऊपर 1630 के ऊपर, तो एक वापस स्विंग टुवर्ड 17 एंड 1750 के आसपास आ सकता है. अगर नीचे 15 के सपोर्ट से अगर पोजीशन है तो 15 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए, ऊपर में 1640 एंड 17 के टारगेट के लिए. Sir, IOB? IOB is in a narrow range. नीचे में 60 का सपोर्ट है, 60 का सपोर्ट है, ऊपर में 63 64 का रेजिस्टेंस है. तो एक नैरो रेंज में, नथिंग स्पेशल इन द चार्ट एज वेल. तो अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो 60.60 के स्टॉक से होल्ड कीजिए. ऊपर में लुक फॉर 6380 एंड 6450 ऑन द हाई साइड. Sir, your view on HDFC? थिंक एचडीएफसी एक बेस बना रहा है, तो नीचे में जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1580 का, तो 1580 तो ब्रेक नहीं कर रहा है. और रिसेंटली 1650 1615 के सपोर्ट से वापस एक स्विंग निकला है 1646 के ऊपर. तो 1620 के स्टॉप से कंटिन्यू बी लॉन्ग इन एचडीएफसी बैंक. अगर पोजीशन नहीं है तो आप नया फ्रेश बना भी सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप ऑफ 1615 or 1620 and look for 1675 on the higher side. We'll take few more queries. Sir, your view on IOC? IOC again same like BPCL, एक strong move के बाद consolidate कर रहा है. तो नीचे में 170 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर 170 जब तक ब्रेक नहीं करता है, यू हैव टू बी लॉन्ग इन आईओसी. ऊपर में 176 179 के टारगेट के लिए. Sir, KFin? ओके, कीफिन टेक अगेन इट्स अ गुड स्टॉक. नीचे से सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 8-10 दिन का कंसोलिडेशन है. तो 970 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. 970 के सपोर्ट से आप होल्ड कीजिए. ऊपर में 1155 1180 के टारगेट के लिए, 1050 एंड 1080 के टारगेट के लिए, 1050 एंड 1080. I guess this would be the last query for the day. Sir, your view on Hudco? आई थिंक गुड को सेम लाइक आईआरईडी है. एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ऊपर से करेक्टिव मूव आया और एकदम नैरो रेंज में चले गए. तो जब तक 275 के ऊपर है, आई थिंक ऊपर में वापस 290 के टारगेट देख सकते हैं. तो 270 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 280 290 292 ऑन द हाई साइड. That will be all for the day, guys. We have initiated 2 intraday calls and we try to take all the stock queries. See you today at 2:30 p.m. for the mid-cap BankX expiry. Thank you, everyone. Thank you, Nikon sir. थैंक यू.